Imran Ahmed, what's going on, man? How are you? Let me dictate something. Give me 30 seconds. I'm going to mute you. Yeah, man, in the office. So, again, finishing up the charts, the pain in the butt is things. And it's Thursday. What's new with you? Yes. Yeah, man. Whatever works. Just have to put something on to look professional. Yeah, basically, dressing up helps me function better, to be honest. Yeah.
I don't care. I don't dress up for people. I dress up for myself. I feel better that way. It's not maroon. No, this is brownish, and this is navy blue. Not navy blue, but light color of blue. And but anyways, as long as it gives me a contrast, makes me feel better, gives me energy, that's what I like. And try it. Dressing up will make you feel better and give you some more enthusiasm, and this works for me all the time. Not, no, it's not nope, no, not maroon. It's not brownish, but yeah, rustic, you can call it. यार उतार के फेंक दूं? बोलो आप. नहीं, आप बोलो, मैं उतार के फेंक दूंगा इसको. Oh yeah, I do. I mean, for me, always, especially on the days like कुछ days होते हैं आपके पास, कुछ दिन होते हैं कि अबे यार बस कुछ नहीं यार, मूड नहीं हो रहा. लेकिन I dress up, especially bright colors, and then it helps. बाबर, क्या हाल है? क्या चल रहा है? यार डेली रूटीन क्या है मेरा? मैं वीकडेज में तो क्लिनिक कर रहा होता हूँ, और वेडनेसडे हाफ डेज, फ्राइडे हाफ डेज, इनफैक्ट लेस देन हाफ डेज. फिर मीटिंग्स और चीज़ें, और ज़्यादा जो कुछ you have to trying to put something new, so spending time on that. In the meantime, यार इसी तरह चल रहा होता है, हर चीज़ मिक्स प्लेट. नहीं नहीं, साउंड आना चाहिए यार. आई थिंक साउंड इज देयर. If you guys, you should be able to hear me. I don't see a reason. I'm not mute. Not discussing politics, guys. This is not a news channel. But yeah. And then if you guys want, you can ask me any health question or any question about life in America. Trying to catch up with all the charts. Yeah, to be honest, being a doctor is boring to me. I mean, after so many times after you have done the same things, same issues, I don't understand. चलो मेरे तो और भी हॉबीज़ हैं, पैशंस हैं, लेकिन वो लोग जो सिर्फ काम ही यही करते हैं सुबह शाम रात, I don't know, man, how they live. I can't. I have done 180, 185. I don't care about computer techs, guys. I have employees, IT guys. I hire them. I don't care about knowing those skills because I don't need to. I cannot be all knowing and all potent and no. So basically, I have people on call. There's an issue, they fix it. I pay them. That's what it is. I hate computers, to be honest. There's one thing that just I don't want to learn. I mean, yeah, basic stuff is fine, but you know, it just doesn't. I just don't like it. Yes, and I'm glad I do. But मैं ये बोल रहा हूँ कि और लोग जो डॉक्टर्स होते हैं वो लाइफ कैसे गुजारते हैं मुझे समझ नहीं आती.
I have like almost 600. यहाँ पे तो ये बहुत कॉमन है यार इधर के, हर तरह की बाथरूम भी अलग हैं, या पता नहीं बाथरूम के बाहर एक मेल एक फीमेल एक और कोई साइन लगा होता है, फिर पता नहीं क्या क्या लगा होता है। तो कभी कभी बंदा सोचता है कि यार ये बाथरूम मैं जा रहा हूँ, ये मेल का है या फीमेल का है या क्या है, बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो बहरहाल, लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड एडवांस हो रही है, मैं समझ रहा हूँ कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही है फालतू की। इसको बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, कि अगर जब पेट भरा होता है ना, तो फिर इस तरह की हरकतें सोचती हैं कि यार बस अब कुछ और करते हैं, कुछ और कॉम्प्लिकेशन करते हैं लाइफ में। आई थिंक इट्स आई थिंक इट्स बोथ। I will be driving something tomorrow though. यार मैं हूँ यहाँ न्यू मैक्सिको में। No, sir, I'm not giving any point of view on any kind of wars. This is not a political channel. This is not a news channel. This is a health channel, and a channel if anybody wants to get some inspiration. But whatever is happening is not, it's just world war doesn't fix anything. It's not a solution for anything. Humanity suffers. Naman Ashraf, kya haal hai? Well, good luck, man. Good luck. Oops. Your mediocre life. I don't know, man. I don't think this is a mediocre life, but if you think so, then good for you. Yeah, this is mediocre life in front of Jeff Bezos and Mark Zuckerberg. And let's see. Nope, I have not. I don't think he has time to meet people like me. He is a multi-billionaire, guys. He is something else. हम जैसे लोग तो यार वो, मतलब I'm okay, but not big good enough for him. I think he is some other kind of animal. Yep. Walter White. Who is Walter White? Let me check. I think I've heard that name, but never. That guy. ठीक है यार. No, don't have anything. No, I have no passion for a computer or anything like that. America is busy, yes. How to control cholesterol? Just stop eating junk food, guys. Stop eating fried food. Stop eating bacon and beef and all that, and red meat, and try turkey, chicken, fish, all that stuff. या कोलेस्ट्रॉल को अभी मैंने बताया आपको, इसके अलावा अगर आपको
कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानना है, आप मेरी यूट्यूब इस पे चैनल पे जाके इन द फर्स्ट मैंने चैनल स्टार्टेड इन जून ऑफ लास्ट ईयर, यू कैन सी सम वीडियोज ऑन कोलेस्ट्रॉल एंड यू कैन हैव अ ग्रेट, यू विल गेट अ ग्रेट आइडिया हाउ टू कंट्रोल इट। जी आपके जॉइंट्स हट फिंगर्स के अगर पेनफुल हैं तो अगर स्टिफनेस भी है, सब कुछ है, तो देखें अगर नहीं गया तो फिर देन यू नीड टू गेट टेस्टेड फॉर आर्थराइटिक वर्कअप। यार इंसोम्निया के लिए तो ये कि यार अपना सेल फ़ोन वगैरह तो आप 2-3 घंटे पहले से छोड़ दिया करें, बिस्तर पे आप टीवी ऑन ना करें, सेल फ़ोन लेके ना बैठें। देयर इज समथिंग कॉल्ड स्लीप हाइजीन, जस्ट लुक इनटू दैट एंड you should be able to figure out very well what to do from there. We just have one. Yeah, no, I like it this way. Less work and I like this style. हालांकि मैंने आज तक धुरंधर मूवी नहीं देखी, लेकिन देखूंगा, सुना है अच्छी मूवी है। वालेकुम अस्सलाम स्ट्रॉन्ग वुमन, क्या हाल है? एज थेफ्ट, हाय हाय टू यू टू। क्या चल रहा है लाइफ में? Yes, I am a doctor here in USA. Yes, it's less maintenance for sure. Saves money for shampoo and everything. Yeah, I am a general physician with, I see pediatrics, geriatrics, and everything in between, plus dermatology and cosmetics. So I do a lot of things besides being a doctor. अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी डॉक्टर इमरान रज़ा USA चैनल पे, तो आप देखें, उसमें फ्रॉम स्ट्रीट्स ऑफ कराची टू अमेरिकन ड्रीम, आपको मालूम होगा कि मैं और क्या कुछ करता हूँ, और मैं मेरी लाइफ हिस्ट्री मालूम हो जाएगी आपको। There is no time to lose weight, there's no age. Whenever you feel like losing, just start it. And weight loss is important. It will keep you healthier. तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसको आप लूज़ करें। And there is no good time for that. As long as you want to do it, do it. Okay, thanks. You will like the channel, and you should please watch that video from streets of Karachi to American Dream, and you would enjoy it. Great, thank you. तो यह अगर आजकल तो वेट लॉस इंजेक्शन वगैरह चल रहे हैं और बहुत लोग ले रहे हैं उसको, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन मसला ये है कि जब आप वो छोड़ते हैं इंजेक्शन, तो फिर आपको आपकी विल पावर इतनी होनी चाहिए कि आप अपना वेट मेंटेन कर सकें, वरना
बहुत मुश्किल होता है, बहुत से लोग काफ़ी सारा वेट वापस गेन कर लेते हैं। या ब्लैक हेड्स, उसके लिए तो आप सिर्फ फेशियल वॉश वगैरह यूज़ करें, कभी कभी आप वो करा लें, फेशियल्स करवा लें, कभी जाके किसी स्पा में एंड ऑल दैट, स्टीम लें, कीप द पोर्स ओपन। यस, आई डू हैव इंस्टा ऑल्सो। मुझे कौन हीरो लेगा यार? ले सकते हैं, लेकिन लिसन, द थिंग इज, टू बी ऑनेस्ट, आई डिड, वन पर्सन डिड ऑफर मी, और उसने बोला कि लेकिन मुझे अपना पैसा भी लगाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। आई एम नॉट गोना पुट माई मनी इन अ मूवी। नहीं, ये आपको लेंगे आप। मैंने कहा नहीं, आई डोंट रियली केयर, आई एम नॉट गोना पुट माई मनी इन दैट, पीरियड। यार अगर आप किसी के लिए काम करते हो तो फिर स्टार्टिंग सैलरी ऑलमोस्ट 300,000 है, $3 लाख साल के, आफ्टर टैक्सेस। मेरे ख्याल में तो मिल जाते होंगे कोई 2 सवा 2 लाख। 777, क्या हाल है भाई? वालेकुम अस्सलाम। नहीं, वो ठीक तो है, लेकिन होता ये है कि जब आप इंजेक्शन लेते हैं तो ठीक है, आपका वेट कम होगा, आपको भूख कम लगेगी, और आप एक्सरसाइज करें और डाइट करें उसके साथ, तो यू कैन रियली लूज़ गुड अमाउंट ऑफ वेट। लेकिन फिर उसको जब आप छोड़ते हैं इंजेक्शन, जो कि आपको कभी ना कभी तो वो छोड़ने पड़ेंगे, तो फिर मैंने नोट किया है कि तकरीबन हाफ से ज़्यादा वेट वापस आ जाता है। और उसको फिर या तो वेट को दूर रखने के लिए आपको पहले से भी कहीं ज़्यादा, you have to be more conscious about eating and exercising, and you have to fight back a lot to maintain it where you are at. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये नहीं लेने चाहिए, आप ज़रूर लें, लेकिन देखें कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है आपको, और आपको कोई और फैमिली हिस्ट्री तो ऐसी नहीं है कि जिसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ये तो बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, एंड दिस इज़ अ रेवोल्यूशनरी मेडिकेशन। I'm a car lover, guys, and this car, I just love green color. This is my seat. प्राइस ऑफ गैस यार, यहाँ पे तो कैलिफोर्निया में तो बहुत बढ़ गई, आई थिंक ऑलमोस्ट $6 अ गैलन। यहाँ पे अभी है कोई ऑलमोस्ट $4 अ गैलन। हाउ टू बिकम अ डॉक्टर? आपको पहले तो जाना पड़ेगा आपको मेड स्कूल, वो करने के बाद आप अ, फिर आपको करनी पड़ेगी रेजिडेंसी, फिर आपको जो भी आप स्पेशलाइज करना चाहते हैं जिस चीज़ में, और या तो इट्स अ लॉन्ग रोड, बट इट्स वर्थ इट। आई मीन बस लॉट ऑफ वर्क, स्पेशली इन अमेरिका, इट्स लॉट ऑफ वर्क। लोग सिर्फ देखते हैं कि डॉक्टर कमाते कितना है अमेरिका में, ये नहीं देखते कि वो उनको करना क्या पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। सो कीप दैट इन माइंड। Minoxidil will help, yes, it can help to maintain, लेकिन वही बात है, अगर आप minoxidil भी छोड़ेंगे तो वो फिर गिरना शुरू हो जाएंगे, लेकिन you can do it, use minoxidil, make sure कि आपको कोई dandruff नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, and then बट अगर आपकी जेनेटिक्स ऐसी है, आपके फादर, आपके चाचा, आपके अंकल, सबको ऐसा है, तो फिर यू प्रॉब्ली विल लूज ऑल्सो। देखें, अगर राइट कोरोनरी आर्टरी इज़ नॉट अ बैड आर्टरी, टू बी ऑनेस्ट, अगर वो होता है LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, दैट इज़ कॉल्ड विडो मेकर, देन उसमें प्रॉब्लम होती। लेकिन बहरहाल राइट कोरोनरी आर्टरी इज़ important artery, but not as important other ones. But besides that, to prevent it, make sure that I hope they put a good stent called drug-eluting stent, which prevents the clot formation in there. अगर उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल उनका नीचे होना है, उनका वज़न कम करना है, उनको एक्सरसाइज करनी है, make sure if he has diabetes, it's controlled, and he needs to be physically active. That is important, yes. At least 30 minutes a day, aerobic exercise, non-stop walking, brisk walking, swimming, cycling, whatever you can do is good.
No, it should be fine, man. Don't be scared. Just make sure that guys don't have any genetic disorders in the family. Get yourself tested to make sure there's no abnormal genes. That is all. This is 7:43 a.m. My clinic starts at 8:15, and so I'm trying to finish up patients' charts from the yesterday's. Even though I can see some cars parked outside already. I'm originally from Karachi, born and raised over there. Yep, 7:14 हो रहे होंगे वहाँ पे, यहाँ 7:44 हो रहा है. I only work clinics, man. Hospital. I don't work for anybody else. Cholesterol was high. Was it LDL or triglycerides? Blood pressure looks fine. Cholesterol नीचे होना है उनका. उनको डाला होगा cholesterol medication के ऊपर. They have to. So stay in touch with a cardiologist. Well, again, there's always a chance for failure. You can also try some other kind of birth controls like IUD or implants or Depo-Provera, those Depo shots. Just talk to a gynecologist. Yes, it snows, but very very little. I mean, maybe इतना ज़्यादा इतना layer होती होगी सिर्फ वो भी flurries. NJ, क्या हाल है? How are you, man? Just online right now for the start of the clinic. Today is another busy clinic, but that's how it is, and work is good, so I don't complain about being busy. So yeah, good. So now, if he has the stent and all that, again, past is past. You cannot change the past. Now go forward from here, make healthy choices, and make sure that the weight stays in control, and take the medications depending on what kind of stent they put in. Sometimes you have to take the blood thinners for at least 6 months to a year, and then go from there. Yeah, likewise, man. It's always a pleasure to see you. So, yep. कीमा समोसा यार ज़बरदस्त चीज़ है. But again, I would rather prefer a chicken samosa because keema beef, you know, that is a little more red meat. ओके जी. और बिहारी डकैत क्या हाल है? लॉन्ग टाइम. यहाँ बज रहे हैं सुबह के 7:48 AM.
Thanks, man. Thank you. This is my clinic room. Nope. I've never been a burger guy. I was a middle class, lower middle class in Karachi, Pakistan. We struggled a lot, and at that time I decided, okay, no, I'm going to work hard and I'm going to live the kind of life I want to live. And I'm glad I can made sure that I pursue my, you know, what I had decided. It wasn't easy, but I, that's how it is. Yeah, drug eludictant जो होते हैं, that they are better. They are more expensive though. But nowadays अमेरिका में तो सारे ये लगा रहे हैं ड्रग, जो दूसरे वाले जो स्टेंट, उसमें लेयर होती है एक ड्रग की, जिसकी वजह से वो स्टेंट वापस से ब्लॉक नहीं होता. Yes, I'm very satisfied from where I am. Yeah, if you make sure you don't have asthma. If you have asthma, then you have to take the inhalers to dilate it. When it could be bronchitis, and so that's what happens in asthma. Or I hope you don't smoke, because COPD can happen too. Yes, different companies make it different. Yeah, but drug-eluting stents are the best. Yeah, man. Delhi or even Pakistan के जो कुछ cities हैं, Karachi and all that, they are considered, even Lahore, pollution. But what can you do? Just keep a mask on, like the KN95 or something. Yeah, have a good company, keep yourself busy, block the negative thoughts. Only you can do it, nobody else can do it for you. तो अभी मैं 15 minutes और online हूँ. As I told you guys before, I'm a civil surgeon, so I also do a lot of immigration physicals for people who want to get green cards. So we have some people coming this morning to get their exams done. No, I don't think so. I have not been to Pakistan for 17, 18 years. 18 साल हो गए मुझे गए हुए. और अब तो मुझे याद भी नहीं कि वहाँ पे क्या क्या बन गया और वहाँ की सड़कें. लेकिन आई वुड लाइक टू गो टू विज़िट. लेकिन अभी भी हालात थोड़े से सही नहीं हैं टू विज़िट करने के लिए. Great, you are a neuroanatomist. Nice.
No, I am a general physician with expertise in dermatology and cosmetics. So just trying to finish up my work from yesterday. I see almost 50-60 patients a day, and एज मैंने जब पहले बताया कि अमेरिका में मसला क्या है कि यार पेशेंट देखना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसकी चार्टिंग, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना, ये बड़ा मसला है. It takes a lot of time. It takes more time to document what you did with the patient than to actually see a patient. It sucks, but that's how it is. That's how the system is in America. क्योंकि यहाँ सब लोगों के पास इंश्योरेंस होती है, और इंश्योरेंस एजेंसीज दे वांट द डॉक्यूमेंटेशन डन, ताकि कल को अगर वो जानना चाहें कि आपने क्या किया उनके पेशेंट के साथ, उनको उन्होंने पैसे आपको किस चीज़ के दिए हैं. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू मेक श्योर दैट इट्स राइट डॉक्यूमेंटेड, एंड देन उसके साथ साथ ऑब्वियसली अगर कोई पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड है, और you know it needs to be in there that what has been done about this patient. No, I'm not. I'm done, man. I've been practicing 20 years in USA. I have no more kira for medicine. I'm done. Yes, I can. मैं सोच रहा हूँ इस बारे में. एंड अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर निकल आए हैं कि जो इफ़ यू आर इन द रूम विद द पेशेंट, जो चीज़ें आप बोल रहे हो पेशेंट के साथ, वो एआई सुन रहा होता है, ऑब्वियसली इज लिसनिंग, एंड देन इज पुटिंग इट इन देयर. तो आई एम थिंकिंग अबाउट गोइंग दैट राउट, लेकिन जो लोगों ने यूज़ किया है वो बोलते हैं कि यार उसमें बहुत गलतियाँ होती हैं, एंड यू हैव टू गो थ्रू ऑल द नोट्स योर सेल्फ. तो अगर बट आई एम श्योर दैट इट विल स्टिल बी फास्टर. तो दैट इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग इनटू. अभी मैंने शुरू नहीं किया, लेकिन आई थिंक इट्स स्टिल न्यू, द टेक्नोलॉजी स्टिल न्यू. और अगर अभी 1-2 साल और होने में, फिर देन इट विल probably get more refined and more accurate. But yeah, Umar Farooq, I agree. The world is getting easier now through AI. प्लस अगर आप लोगों ने मेरा एक चैनल नहीं देखा तो ज़रूर देखें, डॉक्टर इमरान रज़ा यूट्यूब चैनल. उसमें एक वीडियो है फ्रॉम स्ट्रीट्स ऑफ कराची टू अमेरिकन ड्रीम्स. वो आपको मज़ा आएगा देख के, और दैट कुड बी एन इंस्पिरेशनल वीडियो फॉर यू. Neurofibromatosis. That's a tough one. That's difficult. So interested in neurology. What else? हाँ जी. प्लस मैं अभी जाने वाला हूँ लॉस वेगस, April 3rd and April 4th. जिन लोगों को लॉस वेगस लाइव देखना है, you guys can join me and it'll be fun. Anatomy was okay, man. It was too much memorization. Or so yeah, I mean, I like physiology, pathology, something that can create your concept. Pharmacology was good too, but जो चीज़ जिसमें बहुत रट्टा मारना है, याद करना है, anatomy, biochemistry, I hated that. Embryology, histology, all sucked. But what can you do? You have to do those things to get where you're at. I'm good, Samaya. Long time no see. Thank you. Time is 7:58 a.m., almost 8 o'clock, and the clinic starts probably in next 10-15 minutes.
Finally, I'm done with all the notes from yesterday. Oh, what is that? Understand Padma from Padma. What does it mean? I sleep maybe 5 hours, but then I take naps. 5.5 hours. तो मेरे साथ जब मैं नैप लेता हूँ तो फिर that's how I make sure that I sleep at least 6.5 hours a day. You know, sometimes 6-7 hours of sleep non-stop is a good thing, but it's hard to stay asleep for that long. Yeah, at that age, 17 to 25, I think that's a good thing to do some research on, man. When you do the research on, you have some questionnaire, send it for survey, and then let me know what was the response. I have no idea why. डिपेंड करता है यार कौन सा जॉइंट है और किस जगह पे है आर्थोप्लास्टी एंड देन माय वाई एट एज ऑफ 17 to 25 यार बात ये कि at that time you are really evolving and it's an important age. तो मेरा तो वाई ये था कि यार I had to get out and do something, you know, to change my life for good, and that's why I studied hard and worked hard. No, it's not an issue. That's okay. And if you really feel tired, then you can always take a nap. It's all right. Yeah, last year medical student. Uh, yeah, अब तो you are about to enter the real world, and make sure कि आपकी बेसिक्स स्ट्रांग हो, मतलब पैथोलॉजी आपकी स्ट्रांग हो, डायग्नोस्टिक स्किल्स स्ट्रांग हो, क्योंकि अब आप यू विल बी इधर डूइंग रेजिडेंसी और मे बी यू विल जस्ट, अगर इंडिया पाकिस्तान में आप हो तो वहाँ तो you just want to open a clinic and start practicing, then you don't even need residency. अमेरिका में तो रेजिडेंसी चाहिए होती है, तो उसमें फिर ये होता है कि आपका अगर एनफ कॉन्फिडेंस है, गो फॉर इट. बट अगर आप आगे जाना चाहते हैं, यूएस एमएलई करना चाहते हैं या इंग्लैंड जाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप पढ़ें और वहाँ निकलें. लेकिन मेक श्योर दैट दिस इज़ योर लास्ट चांस टू, because you're not going to be having any preceptors anymore or somebody watching over you. You'll be on your own. So create, you know, make sure that you are confident in treating what you are treating. And if you don't know, then at least consult somebody rather than just experimenting and causing harm to anyone. When you're talking about the wound vac, it just helps to, you know, help the wound healing by bringing the edges closer. Laziness तो यार इतनी सारी चीज़ें करो आप, जैसे मैं कि अगर आपको लेजीनेस हो ही ना, आपके पास टाइम ही ना हो लेजी फील करने के लिए. That's what I do. I just don't have time to even think about what is laziness. होम्योपैथी यार मुझे नहीं पता उसके बारे में. आई डोंट नो हाउ व्हाट्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट, बट मुझे याद है मैं जब कराची में था पाकिस्तान में, तो हर गली में होम्योपैथिक डॉक्टर बैठे होते थे एंड उनके पास रश होता था. लेकिन आई हैव नो आइडिया कि उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है. आई डोंट थिंक
अमेरिका में ऐसी कोई चीज़ है, or any recognized field of medicine which helps people cure their problems and diseases. So I don't think personally that it's something that is really credible. I'm good, Sultan. How are you today? Sultana Noreen, how are you? So yeah, I don't think homeopathic medicine is something that really makes a difference. I'm good, man. Pervez Alam. I am here in USA. I think I've seen you here before. Leukemia, तो यार different types of leukemia होते हैं, बच्चों में भी बड़ों में भी, और it's just like a blood cancer. उसमें होता ये कि आपके जो bone marrow है वो it starts to make crazy amount of white cells, and so basically just goes out of whack and produces unsupervised blood tests, blood products in your body, and that's where the tumor comes from. Sometimes उसके अंदर mass भी बन जाता है और चीज़ें भी होती हैं. So there are different types. यार अब उसके अंदर तो आप देखो पहले कि आप क्या किन किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है. आप क्या कोई गेम खेलते हैं, आप क्या चीज़ पढ़ना चाहते हैं. आपका टीवी से दूर रहो यार, टीवी से दूर रहो. सेल फोन ठीक है, इज़ अ गुड थिंग टू हैव, बट उसको लेके सिर्फ ब्राउज करते रहो और चैट करते रहो तो वो मेक्स यू लेजी ऑल्सो एंड विल वेस्ट लॉट ऑफ योर टाइम. तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं लोगों को बोलता हूँ कि यार ऐसे लोगों से दोस्ती रखो आप जो लोग they are go-getters. They're always on their feet. They're always hustling, doing something new. Pain for a spinal injection. Well, if you got epidural, then the spinal pain should be better. अगर आपका ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, अगर लेकिन अगर है तो uh, I mean, give it 3-4 days. If it subside, if it doesn't, then probably you need some other kind of pain medications on top of that. यहाँ पे सुबह का टाइम है 8:07 AM. यार हिंदी, मैं कराची में पैदा हुआ था यार. मैं आई लिव्ड इन पाकिस्तान फॉर एटलीस्ट 25 years. फिर यहाँ मैं मूव हो गया, 25 साल यहाँ हो गए मुझे. Yep, I'm from Karachi. तो यार देखो, मैं पहले ही बताया था कि आई गेट अप एट 4:30 AM, चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो, चाहे वो मंडे हो. तो ये तो मेरा स्केजूल है. आई गो टू बेड अराउंड 9:30 और 10 बजे. एट द मोस्ट 10:30 में सो जाता हूँ. और मेरा जो क्लॉक है, दैट्स हाउ इट इज़. सो एक चीज़ होती है यार, टू सक्सीड इन लाइफ यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड. What discipline means is you have to make sure that you do certain things at the certain times all the time. So I'm closer, yes. So you have to train your mind, and you have to make sure that you follow that routine, and then your clock will be set. Yes, I'm from Karachi, Noreen. Born and raised over there. वो तो मुझे 25 साल हो गए अमेरिका में, और कराची गए हुए मुझे 18 साल हो गए. और मैंने कुछ वीडियोस देखी कराची की यूट्यूब पे, देख के बड़ा अफसोस होता है कि यार इतना कचरा, इतना गंद क्यों है वहाँ पे. मतलब क्या हो रहा है, लोग वहाँ पे एक तो कचरा फेंकते क्यों हैं, नंबर 1. और नंबर 2, अगर फेंकते हैं तो फिर लोग, दूसरे लोग क्यों नहीं उठा रहे, गवर्नमेंट क्यों नहीं उठा रही. इट्स जस्ट बैड.
That's good. माउथ कैंसर तो क्या वो ही वाज चूइंग टोबैको, वो खाते थे वो पान या क्या गुटखा खाते हैं लोग, was he using a lot of that? सिगरेट पीने से भी होता है, ये जो पान खाने से भी होता है, वो एक गुटखा होता है वो खाने से होता है, तो any kind of chemical that touches your lips and inside, तो उससे हो सकता है माउथ कैंसर. Okay guys, अब हो गया है यहाँ पे टाइम 8:11. मे बी इन द नेक्स्ट 5 minutes आई विल बी लीविंग. तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं देखा तो ज़रूर देखें, और उसके और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको ऑल द हेल्थ वीडियोज़ यू कैन फाइंड एंड यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट. सो उसमें एक वीडियो है फ्रॉम स्ट्रीट्स ऑफ कराची टू अमेरिकन ड्रीम्स, वो अगर आप देखेंगे तो यू विल लर्न अ लॉट अबाउट व्हाट आई डिड. एक्सक्यूज मी. Yep. Hello. Welcome to your voice messaging. Yes, sir. Yeah, somebody call me. Yeah, Leslie was calling you. Brian O'Rourke, he hasn't been seen since 7/5. No, since, what is that, 8/25? Since 8/25, and he wants a refill on his Losartan. Is that potassium? And then a Torsten. And he has not been seen since what, August? Mm-hmm. Just give him for a month and then tell him to see me. Okay. Thanks. All right, guys. I think it's time for me to leave. We'll talk again soon. Good morning. My staff is here and patients are coming in. So take care. I'll connect with you soon again, maybe this afternoon or tonight. And take care. Goodbye.